हे गाइस, मैं हूँ डॉक्टर रिधिमा शेट्टी AKA योर फ्रेंडली नेबरहुड OBGYN और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट पीरियड क्रैम्प्स। पीरियड क्रैम्प्स से बेटर कैसे डील कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Have you ever watched those ads of sanitary napkins on TV जहाँ पे the girl is like ये मुझे पीरियड आया है, आज तो मैं वाइट कपड़े पहन के जिम्नास्टिक्स करूंगी, while you're sitting at home with a hot water bag and a tub of ice cream being like ये लोग है कौन। Same guys, same. Period cramps exactly होते क्यों है? एवरी मंथ आपका यूट्रस उसके लाइनिंग को रीग्रो करता है और फिर एंड ऑफ द साइकिल जब प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तभी उसको शेड आउट कर देता है एंड दैट इज व्हाट कम्स आउट एज योर पीरियड। द यूट्राइन लाइनिंग इज कॉल्ड साइंटिफिकली एज द एंडोमेट्रियम। एट द एंड ऑफ द साइकिल एंडोमेट्रियम एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल का यही काम है कि वो यूट्रस की मदद करे टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तभी ही जो अंदर एंडोमेट्रियम बना हुआ है वो निकल के शेड आउट होने लगता है जिसे हम पीरियड कहते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्सेस में बन जाते हैं या एक्स्ट्रा बन जाते हैं इसकी वजह से ज्यादा पीरियड पेन होता है। वो यूट्रस के मसल्स को इतने जोर से क्रैम्प या कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो टू द यूट्रस ही बंद हो जाता है एंड दैट इज व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पीरियड क्रैम्प्स। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर नोन टू बी वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ यूट्राइन क्रैम्प्स एंड पीरियड पेन। पीरियड पेन को हम मेडिकली कहते हैं डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया के टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डिस्मेनोरिया का ये मतलब है कि द पेन इज कॉज्ड ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द केमिकल चेंजेस एंड द हार्मोनल चेंजेस ऑफ योर पीरियड। बट सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का ये मतलब होता है कि द पेन इज कॉज्ड ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग डिजीज और कंडीशन विच इज नॉट येट डायग्नोस्ड। Most women experience period cramps and they usually start about 1 or 2 years after the first period, which is called as menarche. Generally, they first start to occur occasionally and then slowly become frequent and occur at the start of every cycle. Period cramps also are a sign of a ovulatory cycle, which means that in that previous cycle you probably ovulated, because of which the hormones were released and they caused an increase in prostaglandins which caused your period cramps. Period cramps के साथ कैसे डील कर सकते हैं? Let me give you some diet tips and lifestyle tips that can help you to deal with your period cramps better. First thing is to make sure that you are getting enough of sleep. 6 to 8 hours of sleep in the night is very important to help your body repair itself and deal with the cramps better. The second most important thing is to stay hydrated. इसका मतलब है make sure you're consuming 2 to 3 liters of water along with whatever juices, smoothies and fluids that you can, because that will help you to deal with the cramps better. Using a hot water bag or heating pad is one of the best methods to deal with period cramps. The heat acts as a reliever of the inflammation and reduces the intensity of the cramps. I know you don't feel like it, but exercising is one of the best ways to deal with period cramps. Exercise करने से आपके body में endorphins release होते हैं, which are the feel good hormones of the body. ये पेन रिसेप्टर्स को रिड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से आपका पेन सेंसेशन कम हो जाता है एंड यू फील मच बेटर एंड fresher. Fruits and vegetables such as cherries and tomatoes, mangoes and general seasonal fruits are very high in antioxidants and have an anti-inflammatory effect. And I would advise you to consume lots of fruits and vegetables during your periods. Fish, which is rich in omega-3, also helps to reduce period cramps. Any calcium-rich foods such as beans and pulses and green leafy vegetables and cashews and almonds, these also will help to reduce your period cramps. Apart from this, you can also ask somebody to give you a back massage. In general, any form of massage will help to reduce the intensity of the cramps. Or you can partake in yoga or any form of stretching to help relax the muscles.
In your daily diet, you can also include health supplements containing calcium, zinc, or magnesium. These supplements are known to reduce the intensity of period cramps. You can also go for a TENS or a transcutaneous electrical nerve stimulation, which has to be advised by a doctor, where with the help of a small machine, they pass small electrical currents through your muscles to help it relax and to reduce the cramps. अगर ये सब करने के बावजूद भी आपके क्रैम्प्स रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, then it is advisable to go to your gynec and get some painkillers prescribed. There are certain things that you must avoid during your periods to reduce your cramps. Sugar, alcohol, caffeine, and smoking are known to increase the intensity of period cramps, and I would advise you to stay away from all of these things during your periods. Also, avoid fried food and a lot of maida and refined flour, because they also act as an inflammatory factor and can increase your period cramps. Remember that period cramps are not normal. Okay, for some people it may be a physiological process, but if आपके cramps इतने severe है कि your day-to-day activity is getting hampered, you're not able to go to work or you're not able to concentrate on your studies, then it is advisable to go to your doctor and get it checked. Sometimes period cramps can be the sign of an underlying disease such as endometriosis, adenomyosis, or pelvic infection or fibroids. So it's always better to go to a doctor, get yourself examined, get the test done, and only then come to a conclusion. That's it for today, guys. Bye. Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.